Hello all. Hi. Hi everybody. Hello. So today we have two legends in the world of homeopathy again. This is Dr. Krishna Kumar Dinde. I don't have to introduce him. And this is Dr. Rajendra Maske. एक वीडियो अभी उसके साथ हमारा हुआ है. He is the secretary of HHF. As I already told, the most sensitive, emotional, है ना? The most composed. The most composed. And we are going to conduct a remedy right now is Opium. chalo opium. You all know opium, but we are going to give you some clinical tips how opium is seen in clinic and seen in life. Absolutely. See, we don't want to share any cases. See, once we share a case, it will take around 15 to 20 minutes just like this. Right. So the best thing is what we'll give you some glimpses of this remedy. Yeah. So I'll start with Krish. Can you share something? I want my viewers to, I'll join later. Maybe I'll ask Raju to start about Okay, Raju. extravagance of opium. Opium. What is that extravagance of opium? See, basically extravagance we feel more than required or more than it is decided. Out of reach. Disproportionate. Yeah, disproportionate is the right word. And how we can see this in patient basically. Extravagance, एक second में बोलता हूँ. I have $1,000 in my pocket and I want to buy a shirt, and I liked one shirt and it is around. I like this shirt and I thought of अरे चल लेते हैं यार इसको. I'll buy this. 1800 रहेगा ना तो भी लूँगा चल. So he goes to the shop and say I want this shirt. What is the cost? 3,700. Now this is out of reach. Now I just can't afford. Thousands का 1500 का 1800 तो खींच सकता हूँ मैं, लेकिन 3,500 नहीं है बस. This is extravagant. It's That is Beyond my something- reach. Something beyond a limit. beyond the Beyond limit. And everybody's limit is different, is individual, so we have to identify the limit. So something beyond the limit, beyond the reach, above that level is extravagant. है ना? Yeah. बिजनेस करेगा कितना, डॉक्टर साहब कितना हो गया और कितना खर्चा करना पड़ेगा. 3 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी क्या, हाउ फार, अभी भी फर्क हाउ नहीं है तो लॉन्ग, क्या करे. कितना. आपने 3 महीने का टाइम दिया था, मैंने 3 महीना दिया, इतना खर्चा किया, लेकिन आज तक मुझे चाहिए जैसा आराम नहीं मिल रहा है. ये कब बोलेगा? 3 महीने के बाद बोलेगा. अभी ये जो हम लोग बोल रहे हैं 3 महीने तक चुपचाप दवाई लेता रहेगा. उसकी लिमिट 3 महीने तक थी और लिमिट इतने पैसों की थी. आपने तो बोला था डॉक्टर साहब 3 महीना लगेगा, अभी तो 4 महीने हो गए और 3 कितना, महीने तो का क्या खर्चा जिंदगी भी भर, उसने कैलकुलेट किया है वो 3 हाँ. महीने में. जिंदगी भर दवा लेने का क्या. So this is the common, but we are going to share something which is the most common but not explored यस. of opium. एक पेशेंट ने क्या बोला ना, मोलस्कम का केस था. सर ये 2-4 थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ एक आ गया, यहाँ 2 आने लग गए. मैंने पूछा यार 4 महीने से तुझे ये लेजेंड्स है, तू इससे पहले क्यों नहीं आई? वो बोली सर 3-4 थे तब तक ठीक था, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा बढ़ने लग गया है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया है, तो मैंने सोचा अब टाइम है डॉक्टर साहब के पास जाने का. सो देयर वॉज अ लिमिट टू हर a disease condition. There was a limit for the time, and when that has crossed, this is fear of extravagance, a wake up call. फियर को भूलना नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रावेगेंस नहीं, फियर ऑफ Fear is एक्स्ट्रावेगेंस. important. नहीं तो ओपियम अकेले तो ये ओपियम सिंगल आता है. Because we have Extravagance में extravagance बहुत also. rubrics है. Yes, there are Fear many of remedies. extravagance. और ओपियम के बारे में जो होता है ना, सबसे हमेशा हम लोग कंटेंट. A child 6 months of age, fever 104. What should be the reaction of the child? The child should cry, lamenting. Oh my God, mama! No. Temperature. The mother says, Doctor Sahab, looking into his face, I didn't even imagine that the temperature would be 104. Opium. I just touched him and I came to know that he has a fever. Till then he didn't even say a word that he is having fever or headache or body ache. The kid lies still in his bed, no demands, no complaints, nothing. The child of 7 years of girl came to me
with a huge abscess in both the knee joint, but she was not complaining at all, which Yes. is not the usual phenomena in child. No, you as a physician you need to know what is the pain of abscess, and then understand the age. 7 years, abscess, Both the knee joint. and there is no. उसकी मम्मी ने मुझे बोला कि मैंने उसको पूछा कि वो क्या कर रही है, पेन में खेल रही है, उसको कोई तकलीफ, कुछ बोल रही है? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही है. Yes. The This is- rubrics: indifference, complaint, does not. Indifference to suffering. Sufferings. अब ये stages है ना, as Materia Medica has mentioned, there are 2 stages of opium. One is stupefaction, dullness, कुछ नहीं, indifferent stage, and second is the hyper stage. Of every drug remedy has the 2 stages. The overactive rubric is also a rubric. Overactive. At the same time, dullness. Yes, See so the comparison. till a stage, opium is still, is content, is stupefied, and then comes the wake up call, the alarm, and then the stage is fear, extravagance, extravagance. fearful stage creeps in. We have a rubric. You will not imagine there is a rubric fear, full of fear, opium. Yes. Huh? But the one who was very content, who was blissful, cheerful, high spirited. The one who was initially indifferent to the pain, suffering, becomes alert. Alert. Yes, then the stage of alertness comes. So this is the 2 stages where you can identify opium. But when there is no pain, when there is no fever, when there is a chronic condition, how will you identify opium? Very interesting. Very Yes. interesting. So there is a rubric called delusion, stoical to all that happens. So what do you mean by stoical? Stoical means indifferent to pain and pleasure. उसको खुशी भी इतनी फील नहीं होती है. He is never too happy. अपने को कैसा एक चीज मिलती है, लॉटरी लगती है, ये लॉटरी लग गई. इसको लॉटरी लगने के बाद हाँ ओके, हाँ It's अरे okay. ओके. He got 98, huh? Or needless to say, if somebody dies, the reaction is oh, very sad. Okay, the reaction is okay to too much of happiness and too much of grief. Nor Balance. too much of happiness, nor too much of grief. Yes, so Balance. this is that stoical attitude he has. उनको घर संसार में, ये लोग ऐसे होते हैं ना जिनको घर संसार में मन नहीं, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं. इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन खुशी ज़्यादा महसूस नहीं होती, दुख भी ज़्यादा महसूस नहीं होता. मेरा एक पेशेंट ने बोला सर मेरे फ्रेंड की डेड बॉडी सामने थी, सब लोग रो रहे थे और मुझे रोना आ नहीं रहा था. आई वॉन्टेड टू क्राई बट आई कुडेंट, because this is the inertness of opium, this is the stoical attitude. क्योंकि यहाँ तक बातें पहुँचती ही नहीं, See the words inner, stoical. यहाँ तक बातें लगती नहीं है, यहाँ तक बातें पहुँचती नहीं है. मैंने एक ओपीएम की बीवी ने मेरे को बताया, मैंने उसको पूछा कि इनका नेचर बताओ. सर बोले मुझे भी नहीं आज तक पता चला है. मैं बोला शादी को कितने साल हो गए? बोला सर 13-14 साल हुए होंगे. मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ सर, दिस इज द इनर्टनेस, दिस इज द स्टोइकल. फाटक सर ने एक बढ़िया वर्ड यूज किया है, प्लासिड. नो व्हाट डू यू मीन बाय प्लासिड? Exactly. Placid को समझो. Placid. प्लासिड लेक करके आप अगर ये कर लेते हो, तो आप अगर कोई भी लेक में या पानी में कोई भी पत्थर डालते हो या कोई चीज़ डालते हो तो उसमें रिपल्स आते हैं. इट्स अ नेचुरल फिनोमिना वेयर यू पुट समथिंग इनटू द वाटर, देयर हैज टू बी रिपल्स. दैट मीन्स इट चेंजेस Yes. टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ओपीएम डजंट फील दैट चेंज. देयर आर नो रिपल्स even if you put happiness, even if you put grief into it. So this is the placidity of opium, which is Opium. amazingly explained by Dr. Fatak. ये जो मैं अपने ही धुंध में रहता हूँ. धुंध, वो धुंधी है ना, वो जो नशा है ना, वो नशे को समझो ओपियम के. Yes. That blissfulness. Yes. वो बच्चों में कैसे दिखता है ना, अभी मैं बताऊंगा ऑटिज्म के कुछ. कभी कभी बच्चे एग्रेसिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, सब कॉमन रेमेडीज होते हैं, बट उनको पता नहीं चलता है कि वो यहाँ से गिरने वाला है और बार बार उसी जगह से गिरता है और गिरने के बाद उसको लगता नहीं, रोता नहीं. ये उसका पेनलेसनेस है. एक चीज़ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को, मैं इस पेनलेसनेस पे मैंने बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चों को ओपीएम दिया है. समझो इसको अच्छी तरह, राइट इट डाउन करो. Painlessness of the symptoms which are usually painful. When you fall down, there is a bruise This is over most here, right? important. When there is a bruise over here and there is no
pain, the child doesn't cry. I'll give you one more example, Krish. अरे माँ ये बोलती है कि सर ये गिरा है, मैं बोला इतना ग्रीन हो गया, बोले हाँ सर गिर के ग्रीन हो गया है, लेकिन हमने 2-3 दिन के बाद में उसको नहला, मतलब बालों के नीचे था वो, नहला रही थी, तब वो मुझे दिखा कि अरे ये क्या हो गया, गिरा था क्या कहीं? हाँ बोले हाँ 2-3 दिन पहले गिरा था. जीसस क्राइस्ट, दिस इज द पेनलेस ऑफ अ किड. ऐसा और एक किड का कैसा है ना क्रिश, आई विल गिव एन एग्जांपल, आपके क्लिनिक में बहुत काम आएगा कि बच्चे को जब ब्लड टेस्ट किया जाता है, when you give a vaccine to a child, 3 months old child, or there is a blood test of a child, he is in fever, and so always ask this question, how does he react with blood test? The 99% people will say, no, my child cries like anything and everything, that is normal, common, don't take it. अरे वहाँ ले जाने के बाद ही तमाशा शुरू होता है. He is like this, no worries. हाँ लेना ब्लड चेक करो, द ब्लड नीडल जाती है अंदर, ब्लड निकलते हैं, ओके थैंक यू वेरी मच. सो दिस इज द वे ओपियम रिएक्ट्स, दिस इज दैट पेनलेसनेस, राइट? डायरेक्ट ऑटिज्म बीटिज्म भी मिला यार तुम लोगों को, बहुत मजा आया आज तुम्हारा. पेनलेसनेस इज ओनली व्हेन द सिचुएशन इज पेनफुल बट द पर्सन इज पेनलेस. That is most important. That is the PQRS of PQRS. और ऐसे बच्चे हैं ना, उनका नीड बेस्ड कम्युनिकेशन होता है. मोस्ट ऑफ द ऑटिस्टिक किड्स हैव नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, बट ओपीएम का मदर से भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ज़्यादा, उससे भी सिर्फ खाने पीने और दूध की चीज़ें ही लेने तक का इन्वॉल्वमेंट होता है. माँ को अगर पूछो कितना अटैचमेंट है, सर बोले कभी आके ऐसे गले मिला ही नहीं आज तक. जैसे नीड बेस्ड कम्युनिकेशन ज़रूरत है वहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक चीज़ें लगती ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओपियम अफेक्शनेट में भी है, लेकिन बाकी के रेमेडीज़ की तरह उतना अफेक्शनेट है, लेकिन अंदर से उतना अफेक्शन नहीं है. दिखावा अलग है, लेकिन अंदर से. मम्मी 2 दिन सेमिनार के लिए गई तो ओपीएम चाइल्ड बोलते ठीक है चल, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टैंड दिस. तो अदर नो मम्मा प्लीज डोंट, नहीं ठीक है चल, नो प्रॉब्लम. कंटेंट, understand? Yes, so content and quiet. This is really very interesting, and we have given opium like, I don't have one more rubric I would like to आज तुम्हारा बहुत मजा है यार, पूरा इतना बड़ा वीडियो नहीं होता है फिर, ठीक है ऐश करेंगे आज हम. वी आर इन अ सेमिनार टुडे, a day before 20. this धरलेस ना, this is the friendship my dear friends. This friends, तो दोस्ती होती है ना, तो दिल दोस्ती और होम्योपैथी की जो मज़ा है ना, वो आप कभी ये मत करो. हैव फ्रेंड्स, एंजॉय विद देयर कंपनी, चैट, डिस्कस, कॉरल विद देम. इनसे तो मैं झगड़ा इतना करता हूँ कि आप, तेरी तो मेरी तो ऐसे होती, इतनी झगड़े होते हैं, लेकिन उसमें होम्योपैथी होती है. दोस्तों के साथ होम्योपैथी सीखने का जो मजा है, कल टुमारो विल बी द फेस्टिवल ऑफ HHF at Grand Saya Resort. Amazing, more than 500 crowd, and will be enjoying like anything. Next time don't miss, ever even try to miss it, okay? तो एक रूब्रिक बोलूँगा आज, अलर्ट. अलर्ट का मतलब मालूम है आपको? अलर्ट का झोपी गेले लागेलेला जागा झाला. तो वे बच्चा 6 महीने का, 7 महीने का, आपको बहुत लोग बोलेंगे ना डॉक्टर साहब नहीं ऐसा कैसा है ना डॉक्टर, कैसा है उसका, कि एक बार आया ना डॉक्टर, 9 महीने का बच्चा था डॉक्टर, कैन यू इमेजिन. एक बार आपके क्लिनिक में आया, नेक्स्ट टाइम बोला, उसने पहचान लिया कि क्लिनिक में है, क्लिनिक है ये क्लिनिक में जा रहे हैं हम लोग. 2 साल के बाद याद है हम लोग ये क्लिनिक में हम लोग गए थे. वी आर रूब्रिक्स विच एक्सप्लेन्स दैट अलर्टनेस विथ सेंसेस एक्यूट, सुपर सेंसेस एक्यूट. So that is the second stage, alertness, very promptness. very sensitive with senses, not emotionally sensitive. Yes. Just like what the placidity of opium was, with that respect to emotions, but this sensitivity of nervous system, very strong senses, smell. अरे पापा है शायद, मम्मी पापा है, कैसा पता चला? नहीं स्कूटर क्या किधर, मुझे तो नहीं आई. He hears it. Very interesting, very common. Yes. These are PQRS ना? PQRS. सवाल पूछो, इमोशनल है, प्रैक्टिकल है, जवाब मिलता है इमोशनल भी नहीं और सर प्रैक्टिकल भी नहीं. नहीं एक्चुअली नहीं, जब पेरेंट्स विल लुक हो इन, सकता है, पेरेंट्स जब अपने आप को देखेंगे ऐसा, क्या लगता है तेरे को? मम्मी भी देखेंगे, सोचना पड़ेगा उनको. This is, चलो, these were the few glimpses and we'll come back opium. again. My dear friends, there are 2 sides of opium, but see, this is just a glimpse. We cannot explain the whole. As usual, I always tell, this is not. We want to
just tell you how we understand homeopathy with such simplicity, so that you also could practice homeopathy Yes. at ease. This at ease and Ease at is grace. Now, this is very important. And just you got some insights and experiences from of 2 decades. Yes, So yes, guys, yes. So that's Thus, all enjoy. about, not all about opium. That's just a teaser of opium. So Yeah, few glimpses now of I have opium. promised you I'll be coming up with n number of videos with these doctors. with the groups. This is Dr. Krishna Kumar Dinte and Dr. Rajendra Maske. So, and Hope of to see course, you again. hope to you. Yes. Yes, yes. अरे बहुत videos आएंगे अभी. बहुत Yes, आएंगे. yes. So signing off till we meet again. Yes, see you tomorrow.